he was like a magician. लेकिन यार पे थोड़ा सा अजीब ही हो गया, कहा था Butcher of Gujarat. We don't believe that cutting our nose to spite our face is a good foreign policy decision. अगर इमरान और बिलावल की डिबेट हो तो कौन जीतेगा? बिलावल भुट्टो जरदारी वर्सेस राजदीप सरदेसाई. राजदीप उसको उधर फंसाने की कोशिश करता है कि जहां पे इसने मोदी को कहा था Butcher of Gujarat. We can have issue with the choice of words that anybody uses, but everybody knows that neither politics is personal nor diplomacy is personal. इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया बिलावल ने, और उसके रिस्पांस के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे. पहला पार्ट ये कि neither diplomacy or politics is personal. Do you want to create an environment that is conducive to talks? Do you want to implement your own stated foreign policy agenda, which is neighbors first? And if India's foreign policy's motto is neighbors first, then they have to do some sort of engagement with one of their neighbors. और दूसरे पार्ट में उसने बड़ा क्लेवरली इंडिया के स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के नेबर्स फर्स्ट को लिया और उसने कहा कि जी वी वन ऑफ योर नेबर्स एंड यू डोंट वांट टू एंगेज विद अस. तुम अपना ही फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव वायलेट कर रहे हो. सो दैट वाज अ वेरी क्लेवर रिस्पांस. बिलावल वाज थिंकिंग ऑन हिज फीट. ही वाज प्लेइंग विद वर्ड्स. टर्न ऑफ फ्रेज था वेरी कॉम्पिटेंटली डन. अच्छा, यहाँ पे अमेरिका का वो पुराना नैरेटिव पाकिस्तान को डू मोर कहने का, इंडिया हमेशा से उस पर पिगी बैक करता रहा है और अब राजदीप भी वही राग लाप रहा है. We want Pakistan to show and prove you've got to do more. And interestingly, using the exact same words, you got to do more. So The world wants you to do more. We're working for ourselves, not for you, to deal with this issue. पहले तो having the presence of mind to insert कि जी हम ये तुम्हारे लिए नहीं कह रहे, ये अपने लिए कह रहे हैं. And it is an issue of serious concern. And it is an issue of serious concern. If we're going to turn terrorism into a political point, whether it is for domestic politics or geopolitics, then we will not be able to resolve this issue. And frankly, at the moment, this issue has become far more complicated since the fall of Kabul. He's not just bickering over कि जी आखिरी सवाल क्या था. इनफैक्ट सवाल ये था कि जी you got to do more, और वो उस कन्वर्सेशन को कहीं और मोड़ गया और एक और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में ले गया. उसने कहा कि जी अफगानिस्तान में जो मामलात हो रहे हैं वो बहुत गंभीर हैं. The manner in which various terrorist organizations that are a threat to me, that are a threat to you, that are a threat to many other countries, are able to coordinate and conduct themselves today was not the case a year ago. और वो तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी और पूरी दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है. At the moment, the fallout of that is being borne by Afghanistan and Pakistan. As I said in my speech today, we may be the first to be affected, but we will most certainly won't be the last. We're the first to be impacted, but not the last. That also shows vision, and he ends it on a very statesman-like, foreign minister-like note. And despite everybody's emotions, despite what may have happened in the past, what I'm suggesting is we must work together to ensure that the inevitable nightmare scenarios don't develop. And it also shows Bilawal's ability कि वो एक conversation को जिस direction में जा रही थी उसको mold कर सकता है और अपनी मर्जी की direction में ले जा सकता है जहाँ पे उसको बेहतर results मिले. What I'm suggesting to you is that at the moment we have a very grave security concern developing in our neighborhood. ये बिलावल का दूसरा self inflicted blow है. बात हो रही है और वो अजीब से जेस्चर्स और टोन यूज करना शुरू कर दिया. थोड़ी सी छाप मुझे बेनजीर किया. ये चल जाता है अगर आप थोड़ा सा रब इन करो, थोड़ा लटकाओ बात को, लेकिन यार पे थोड़ा सा अजीब ही हो गया. We have a very grave security concern developing in our neighborhood. But Bilawal immediately gets back at him. Very relevant to the SCO. That will make us forget all terrorist incidents of the past. बिलावल बात कर रहे हैं कि जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो हम सब के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा. Created by Pakistan with due regard, sir. These groups were sponsored in the 1980s by Pakistan. और राजदीप साहब बीच में आ गए, नहीं जी ये भी पाकिस्तान ने क्रिएट किया है.
और ये बिलावल को फ्रस्ट्रेट करता है. बट द रीजन दैट आई एम काउंटिंग दिस इन बिलावल्स फेवर इज कि वो शो करता है अपनी फ्रस्ट्रेशन. Created by Pakistan with due regard, sir. These groups were sponsored. That's actually showing frustration. Consciously showing frustration is an act of confidence. अगर आपसे frustration leak हो जाए, that's a sign of weakness. And Bilawal initiates another series of attacks. These groups, some groups, not all groups, were sponsored by the United States, not by Pakistan, not by the people of Pakistan. It was a dictator's policy. पहले तो जो राजदीप कह रहा है कि जी तुम लोगों ने तालिबान को सपोर्ट किया, तो वो उसको ब्रेक डाउन करता है, एक एक पॉइंट करके ब्रेक डाउन करता है. सबसे पहले तो वो सारे ग्रुप्स नहीं, कुछ ग्रुप्स. दूसरे ये कि हमने नहीं सपोर्ट किए थे, अमेरिका ने सपोर्ट किए थे. तीसरा ये कि पाकिस्तान की तरफ से वो पीपल ऑफ पाकिस्तान नहीं थे, वो एक डिक्टेटर था जिसने ये डिसीजन किया था. उसकी एक्चुअल बॉडी लैंग्वेज थी कि वो जो उसको समझा रहा है, कह रहा है कि यार मतलब उसके जेस्चर्स ऐसे थे जैसे वो एक छोटे नादान बच्चे को समझा रहा है. But obviously, facts don't matter to you. Again, an I am better than you attack. Facts don't matter to you, they matter to me. I am better than you. What I'm trying to suggest is that we have had issues in the past. They've caused concern Facts for matter to me, sir, Pakistan. with due regard. I'm sure. आप सिर्फ ये नोट करो कि कितने सेकंड्स बाद he comes back and explains facts matter to me, sir, with due regard. What I'm trying to suggest is that we have had issues in the past. They've caused concern Facts for matter to me, sir, Pakistan. with due regard. I'm sure. मतलब वो इतनी देर इसी पे सोच रहा था. They may also, they matter to India, they matter to Pakistan. The best part for me was कि बिलावल कितना कामली उसको कहता है. I'm sure, yes. They've caused concern Facts for matter to me, sir, Pakistan. with due regard. I'm sure. हालांकि उसके बाद जो कुछ बिलावल कहता है वो थोड़ा सा उसको वाटर डाउन कर दे. वो कहता है facts matter to me. If he had just left it at yes, I'm sure that would have been more powerful. And unfortunately, what we see today is a hyper-partisan, hyper-polarized international relations geopolitical environment where it's not easy to find that common ground. अब बिलावल बात कर रहे हैं हाइपर पोलराइज्ड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की. And what my proposal was today... Sir, created by, in a way, I repeat, Pakistan. You talked today, lament about the fall of Kabul, the groups that... फिर छलांग मार देते हैं कि जी ये भी पाकिस्तान की वजह से. At this stage, Rajdeep doesn't even understand कि बिलावल क्या रहा है. Taliban-linked groups were all sponsored by the ISI network. Why let's not kid our... राजदीप साहब इस वक्त इतने एजिटेटेड हैं कि उनसे वर्ड्स भी सही नहीं बोले जा रहे. ये ओपनिंग देख के बिलावल starts with another combination attack. Let's So not it's even very deny, easy sir. and it's very unfortunate because when hate drives the entire conversation, when someone's taught that just because you're a Pakistani, everything you do is wrong, or just because you are a Muslim, everything you do is wrong, or you are at fault for everything, it's very easy to stop critical minds from thinking. And when critical mind stops thinking, then we end up being unable to solve problems. And when he moves on to saying when hate drives the conversation, critical minds stop thinking, he's pointing out Rajdeep. He's saying your critical mind has stopped thinking. This is again an I am better than you jab. He's saying कि मेरा critical mind सोच रहा है, तुम्हारा critical mind has stopped thinking because hate is driving your conversations. You might get some sort of satisfaction by relishing in the accusation that somehow Pakistan is to blame for global terrorism. और ये अगला अटैक इस कॉम्बिनेशन में कि you might get some satisfaction in relishing in the fact कि पाकिस्तान is the root of all evil या all terror. तो this is again an I am better than you attack कि तुम तो चस्के ले रहे हो और तुम क्रिटिकली नहीं सोच रहे. और अब वो इसको फॉलो अप करेगा कि मैं सीरियसली सोच रहा हूँ. Now, I truly do want to solve this issue, which is why tomorrow in Pakistan, I'm going to have a trilateral meeting with the Afghan interim foreign minister and the Chinese foreign minister, because I'm going to work together with serious people, with rational people, to try and resolve what is a pressing issue for this region. यहाँ पे वो मल्टीपल लेवल्स पे आई एम बेटर देन यू अटैक मार रहा है. सो एक तो ये वो कह रहा है कि जी मैं इस मामले को सॉल्व करने में सीरियस हूँ. दूसरा ही इज पुलिंग रैंक आल्सो कि जी मैं एक फॉरेन मिनिस्टर हूँ और मैं तो अफगान फॉरेन मिनिस्टर और मैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिलकर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ. और तीसरा हिज एम्फेसिस ऑन सीरियस पीपल मीन्स कि जी हम सीरियस पीपल हैं. सो दैट्स काइंड ऑफ लाइक पुटिंग हिम डाउन कि हम सीरियस पीपल हैं, तुम नहीं हो. ज़ेरे लब ये मैसेज दे रहे वो. सो इट्स अ मल्टी प्रोंग्ड अटैक. So the population of Muslims, ironically, in India has grown
in recent times, while in Pakistan the population of Hindus has declined. अब बात आगे चल निकली है persecution of Muslims in India and persecution of Hindus in Pakistan. Because there is forcible conversion, there have been attacks on temples. I can give you the long list. If you are saying you and your party is committed to interfaith harmony, उस पे राजदीप ने अपना पॉइंट मारा, लेकिन he spent more effort than necessary to get the point across. you must ensure that this doesn't happen. You come from sin, you must ensure it doesn't happen. I mean, that, you see, again, it's Sir, the I proof think of the that's pudding, sir, absolutely lies in the eating. He's putting in too much effort. अब इसको बिलावल इतना calmly dismantle करेगा कि it's almost not a competition anymore. So evil exists everywhere in the world. The question is, how do you respond to it? Now this is brilliance. This is sheer brilliance. कि वो जो बात कर रहे हैं कि जी तुम लोगों को ये persecution रोकनी चाहिए, उसको abstractly deal करना कि evil exists everywhere in the world. It's not something that you can entirely get rid of. What really matters is कि आप उसको respond किस तरह से करते हो. ये acknowledge करते हुए कि evil exists in the world, उसने actually राजदीप के सारे points nullify कर दिए हैं. मतलब अब वो count करता रहे कि जी हिंदू लड़कियों की शादियां भी कराते हैं, ये करते हैं, आप सारे points nullify कर दिए हैं just by ceding and conceding कि ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन अ रीजनेबल वे कि ये प्रॉब्लम्स हर जगह होते हैं एंड यू कैन नेवर गेट रिड ऑफ. सो इन वन मास्टर स्ट्रोक बिलावल नलिफाइड ऑल द पॉइंट्स जो कि वो लिस्ट करने बैठा हुआ था. In my province or in my country, if such an incident takes place, I will be on the side of the victim. I will try, and the life is unfair, our institutions and system is unfair. There are times where I will not be successful. And then having the presence of mind कि qualify भी करे अपनी statement कि हमेशा आप solve नहीं भी कर सकोगे, systems खराब होते हैं, life is complex, but at least you're trying, your intention should be in the right place. But my attempt will be, my want will be, my niyat will be that I would want to try and resolve an issue in an amicable way for the victim of the use of Urdu. Your niyat should be, ये भी एक थीम आगे जाके हम देखेंगे. In critical times, Bilawal has started using Urdu words. I think this point is worth mentioning because Bilawal is much more comfortable and fluent in English than in Urdu. और यूजली होता ये है कि आप अगर किसी बात में फंसो तो आप यूजली उस लैंग्वेज में फंसते हो जिसमें आप इतने कंफर्टेबल नहीं हो एंड देन यू रिवर्ट टू दैट लैंग्वेज की जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो. आप नोट कर रहे होगे कि मैं अक्सर जगहों पे इंग्लिश यूज़ करता हूँ बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू स्पीकिंग इन इंग्लिश कि हम अगर उर्दू में फंसते हैं, स्पेशली मुश्किल लफ्ज़ उर्दू के फंस जाते हैं, तो फिर हम इंग्लिश पे रिवर्ट कर जाते हैं. यहाँ पे द रिवर्स इज हैपनिंग. सो आई थॉट इट वाज वर्थ मेंशनिंग कि ये ट्रेंड चल रहा है और ये आगे भी होगा. Can you give us that assurance? I do it every day if you just Googled or looked. Another series of combination attacks coming Rajdeep's way. पहला अटैक तो ये है कि if you only care to Google, मतलब तुम रिपोर्टर हो, तुम गूगल तक नहीं करते, तो अपना होमवर्क भी नहीं करते. He is totally putting him down. So I'm trying to suggest that hate has no borders. You have hate incidences and with increasing frequency all over the world. The India that my mother raised me explaining how this India was like, I was told that India was a secular democracy. And I, growing up now as a young adult, see a very different India. So look at the mastery that Bilawal is displaying here. So ना सिर्फ वो जो उसने स्पेसिफिक बात की कि जी यहाँ पे ये अटैक होते हैं हिंदुओं पे, ना सिर्फ उसने उसको एब्स्ट्रैक्टली डील किया कि जी सिर्फ यहाँ नहीं होते, हर जगह होते हैं and this is something you can't really get rid of, जो कि पहले एक थीम चल रही थी, बल्कि उसको masterfully उसने फिर कन्वर्सेशन को मोल्ड कर दिया द नेचर ऑफ द इंडियन रिपब्लिक की तरफ. कि हम बचपन में सुनते थे कि इंडिया एक ग्रेट रिपब्लिक है, लेकिन अब ग्रोइंग अप व्हेन आई एम अ ग्रोन एडल्ट तो मैं देखता हूँ कि इंडिया एक दूसरी तरफ जा रहा है. एंड दिस हिट्स हार्ड ऑल्सो बिकॉज दिस इज अ करंट डिबेट गोइंग ऑन करंटली इन इंडिया कि हिंदुत्व और ये इंडिया किस तरफ जा रहा है, और is it an India of Nehru or is it an India of Modi? मतलब सवाल उससे कुछ और होता है और वो उस सवाल को भी masterfully respond करता है, लेकिन फिर he molds the conversation into another direction जो कि उसको और भी ज़्यादा serve करती है. So can I ask you, in the case of the gang rape of Muslim women in Gujarat during the 2002 riots who were recently pardoned by your government, Yes. what sort of message do you think that sends to the Muslims everywhere? यहाँ पे Rajdeep makes a very feeble attempt of being an apologist for Modi, लेकिन उसको सही चंगा ठंडा किया है
May I also And tell you, sir, that there are a number of Indian citizens who've gone to the Supreme Court and demanded that the individuals who spent 15 years and more in jail, they continue to remain in jail for life. So we have a robust civil society. I'm as do we in Pakistan. But what I'm suggesting to you, if I had given a pardon like this, you would not let me forget it. You would not be defending me by saying that, oh, but some citizens took me to court. You would say it is wrong, and it is wrong if it happens in India, and it would be wrong if it happens in Pakistan. सही शट डाउन किया है बिलावल ने उसको यहाँ पे. You continue, Mr. Minister, to harp on Kashmir. अब यहाँ पे राजदीप साहब ने पॉइंट मारने की कोशिश की कि यू हार्प ऑन कश्मीर. अब ये एक वर्ड है जो कि ऐसी है जैसे आप राग लाप रहे हैं कश्मीर की, और ये जाके जरा चुभता है बिलावल को, और आप उसकी ये बॉडी लैंग्वेज देखें, यहाँ पे उसको थोड़ा सा ये बुरा महसूस हुआ. लेकिन ये राजदीप ने आ बैल मुझे मार ही कर दिया. बिलावल ने उसको टकरे मार मार के. Is there a realization somewhere that this obsession with Kashmir over the decades has cost Pakistan economically and, dare I say, politically and diplomatically? I don't have an obsession, but this is a commitment that you made. अच्छा, यहाँ पे एक बहुत फाइन और सटल टेक्निक यूज कर रहा है बिलावल, और वो ये कर रहा है कि वो पॉज करता है एट द एंड ऑफ हिज सेंटेंस एंड ही फोर्सेस राजदीप टू एक्नॉलेज. आप नोट करो कि अभी आगे जाते हुए जो क्लिप होगा उसमें बिलावल रेगुलरली पॉज करेगा और फिर राजदीप उसको एक्नॉलेज करेगा. I don't have an obsession, but this is a commitment that you made, that India has made to the people of Kashmir. It's a commitment that we've jointly made. And what I don't understand, this is a confident country, as a country that is proud of its success, that is proud of its democracy. What is the harm to India in abiding by the same UN Security Council resolutions? Technically, because acknowledging कहना is also kind of agreement, it kind of comes across as agreement. तो उसको पॉइंट भी मारे जा रहे हैं, पॉज करते हैं और फिर आगे से ही नीड्स टू एक्नॉलेज और कहते हैं सो ना सिर्फ बिलावल उसको पॉइंट मार रहे हैं बल्कि उससे एक्नॉलेज भी करा रहे हैं. दैट्स लाइक यू पंचिंग हिम एंड हैविंग हिम क्लैप एट यू, फिर आप उसको मारो फिर वो आपको क्लैप कर रहे हैं. इट्स अ फाइन पॉइंट बट इट्स सर्विंग बिलावल रियली वेल हियर. That are a result of their prime minister going to the United Nations. What is the harm in having a plebiscite? As I said, the plebiscite will also turn into POK. Sure. I am happy to. I'll lead the campaign in Gilgit-Baltistan. आप जाके श्रीनगर से campaign lead करें, मगर referendum तो hold कर ले. Okay. राय शुमारी हो जाए, बात खत्म हो जाएगा. Okay, but आपके लिए, मेरे लिए, and सबसे भरकर जो कश्मीर के अवाम के लिए, because it's not मेरा obsession, it's उनका obsession, and वो generation after generation एक ही मुतालबा कर रहा है, और मेरा और उनका एक ही मुतालबा है कि राय शुमारी करके दिखाए. और यहाँ पे हम एक और इंस्टेंस देखते हैं कि बिलावल रिवर्ट्स टू उर्दू. ये क्यों कर रहा है और इस मौके पे क्यों किया, आई एम नॉट रियली श्योर, क्योंकि इट डजंट फॉलो द रेगुलर पैटर्न कि इफ यू नॉट टू फ्लुएंट इन वन लैंग्वेज तो फिर यू रिवर्ट टू अ लैंग्वेज दैट यू मोर फ्लुएंट इन. यहाँ पे वो रिवर्स में चल रहा है. उसकी क्या वजह है, आई एम नॉट एग्जैक्टली एबल टू फिगर इट आउट, बट इफ यू कैन फिगर इट आउट लेट मी नो क्या हो रहा है यहाँ पे. वो क्यों बार बार उर्दू पे रिवर्ट कर रहे हैं फॉर अ फैक्ट, हालांकि होना उल्टा चाहिए. मे बी देयर इज समथिंग आई एम मिसिंग दैट यू कैन हेल्प me out with. Let me know in the comments. As I said, our official position remains that Kashmir is an internal matter. We will resolve it. But look at what is done. Why did you go to the UN if it was an internal matter? No, I'll tell you. Now Bilawal is just toying with it. वो कह रहा है कि जी ये हमारा internal matter. उसने कहा तुम UN में गए क्यों थे अगर internal matter? He's just having fun here. What it's done to Pakistan, this support for cross-border terrorism. Look at we don't support cross-border terrorism. Okay, you will say that we will provide you evidence. He doesn't even feel like Rajdeep a serious opponent at this stage. But look at your economic condition, 36% plus My inflation. For just a minute, sir. Foreign exchange reserves at $3 billion. Do you appreciate the nature of the crisis you're facing, sir? Absolutely. But does that mean I should ignore the injustice that is happening in Kashmir? Just because I too am facing my own problems, I'm willing to face my own problems as well. I believe my problems have nothing to do, and are no fault with the people of Kashmir. And while we are facing difficult times, these are temporary difficult times, and I'm sure that we will rise again. Doesn't even need any commentary anymore. I mean, Bilawal is wiping the floor with Rajdeep. Mr. Bhutto, though,
you're here for an SCO summit, interestingly. The fact is there hasn't been a SARC summit, a South Asian Regional Summit, since 2014, since Kathmandu. Yeah. India has boycotted the idea of a summit in Pakistan since 2016. You're saying sabotage. The fact is that SARC, many believe, is being held hostage, or that's how we see it, to Pakistan's state sponsorship of terror. I see. Does Pakistan see a future for itself in... I mean, normally आपको इस तरह के जेस्चर्स नहीं करने चाहिए, they come across as childish, मगर यहाँ पे इतनी obvious बोंगी मार रहा है राजदीप कि जी इंडिया ने बॉयकॉट करके सैबोटाज किया तो सार्क होता ही नहीं है, इसका भी कसूर तुम्हारा है, पाकिस्तान का है कि तुम लोग टेरर एक्सपोर्ट करते हो जिसकी वजह से हमने बॉयकॉट करके सैबोटाज किया. एंड दिस वाज सो ऑब्वियसली डम कि बिलावल का रिस्पांस एक्चुअली fits in perfectly here, and this is the final "I'm better than you" attack जो कि बिलावल उस पे करता है. As far as SARC is concerned, I mean, it just shows your country's pettiness when it comes to foreign policy. And my presence here shows that Pakistan's foreign policy is completely sort of the juxtaposition to your country's foreign policy. If we don't believe that that two wrongs make a right, that cutting our nose to spite our face is a good foreign policy decision. Every single point he makes here just proves the very same fact, that I'm better than you. My country is better than your country. Our position is better than your position. Which is why, despite our bilateral differences, despite our position after August 5th, 2019, I've chose to attend in person at the SCO, because India is not the only member of the SCO, if you haven't noticed. We're all equal members of this organization, and Pakistan has fantastic bilateral relations with every single other member of this organization, who sees a huge potential in the China-Pakistan economic corridor for regional integration. तो स्कोर कार्ड देख के आपको पता लग रहा होगा कि ये तो कंपटीशन ही नहीं था. It seemed as if they weren't even playing the same game. मतलब बिलावल उससे इतना आगे था कि राजदीप looked like a novice. उसकी एक वजह ये भी है कि राजदीप के आर्सेनल में बहुत लिमिटेड अटैक्स थे, और उसका प्राइमरी मोड ऑफ अटैक यही था कि उसने चीजें लिखी हुई थी और वो बस उसकी तरफ थ्रो करता था, बिलावल की तरफ. There was no imagination. He wasn't zooming out and he wasn't finding holes in Bilawal's argument और फिर उसको एक डिफरेंट तरीके से अटैक नहीं करता था. So very limited attack coming from Rajdeep Sardesai. On the contrary, Bilawal was thinking on his feet, and eventually शुरू के exchanges के बाद he was so confident that he could not only respond with effect but also mold the conversation where he wanted it to go. He was like a magician. और राजदीप को समझ आ भी अगर गई हो, there was not much that he can do. So Bilawal literally blew away Rajdeep Sardesai here. Now to the million-dollar question कि अगर इमरान और बिलावल की डिबेट हो तो कौन जीतेगा? Now let's war game this. What worked for Bilawal in his interview with Rajdeep was that first of all, Rajdeep was a very weak foe. So उसके बहुत लिमिटेड अटैक्स थे और वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं यूज़ कर पा रहा था, एंड बिलावल वाज एबल टू रन सर्कल्स अराउंड हिम. दूसरी चीज़ दैट वेंट इन बिलावल्स फेवर वाज कि उसके पास सब्सटेंस और फैक्ट्स बेहतर थे. जो राजदीप बात कर रहा था उसमें कुछ तो बिल्कुल ऑब्वियस बोंगियां थी, बिकॉज ही हैड टू टो द लाइन ऑफ द इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, एंड दैट ऑटोमेटिकली पुट हिम ऑन द डिफेंसिव, एंड दैट डिडंट सर्व हिम वेल in being able to counter the variety of attack जो कि बिलावल की तरफ से आ रहा. If Bilawal is debating Imran Khan, तो उसके पास ये edge नहीं होगा. In fact, ये edge इमरान के पास होगा. Imran would more be on the side of the truth, and Imran would more be on the side of the substance. और इतना ज़्यादा gap in substance and truth हो तो it becomes a little bit hard to cover, even अगर आपकी टेक्निक बहुत बेहतर है. अगर हम इमरान की साइड पे फोकस करें, सो उसकी जो टेक्निक है ऑफ स्पीकिंग फैक्ट्स एंड स्पीकिंग द ट्रूथ एंड अपीलिंग टू योर सेंस ऑफ जस्टिस एंड देन इनवाइटिंग यू ओवर टू हिज साइड, वो टिम सेबेस्टियन के साथ इतनी अच्छी इसलिए नहीं चली कि टिम डिडंट नो द फैक्ट्स ऑफ द सिचुएशन. तो वो एट द बैक ऑफ हिज माइंड ही वाजंट हेल्ड बैक, यार मैं बोंगी मार रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ. वेयर एज इफ इट्स इमरान एंड बिलावल डिबेटिंग, इट वुड बी एट द बैक ऑफ बिलावल्स माइंड कि the facts don't support my position. और I think वो थोड़ा सा बिलावल को hold back करेगी if he was ever to debate with Imran, which I never think he ever would. No other leader in Pakistan except Imran has the balls to come and debate any other leader. This feature is unique to Imran Khan. So this is a totally hypothetical situation. It will never come to pass. But if it does ever come to pass, I think Imran might just edge out Bilawal here. Bilawal has much better technique, but the truth is definitely on Imran's side.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ना सिर्फ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि इसको अपनी सोशल मीडिया पे भी शेयर करें। जितना ज़्यादा वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स होंगे, मैं उतना ही टाइम इस चैनल को दे पाऊंगा। Your support means the world to me, so please help me make this channel the source of one of the best content coming from Pakistan. Thank you.